Can you hear me clearly? Yes. Okay, we can start. Please relax and introduce yourself. Okay. My name is Himanshi Soni, and I am from Firozabad, UP. I completed my graduation from Ishan College of Engineering, Paramathura, UP. Uh, Last year, I joined PNSA Technology in May for my internship. And throughout my internship, I have learned about the Salesforce platform. In my sale, I learned I learned and developed my skills in Salesforce admin and developer development. In Salesforce admin, I learned about flow data security models, roles, profile permission, set, trigger, and and in developer portion, I have learned Apex and basic knowledge of LWC. Currently, I'm looking for an opportunity to join a full time where I can learn and grow my skill for an organization development and mind both. Okay. Uh, what is Salesforce? Salesforce is a cloud-based CRM cloud-based CRM that is used to manage the customer service, sales cloud, service cloud in a single platform. And what is Salesforce Administrator? Salesforce administrator. Yes. Salesforce administrator work on the drag and keep point and click tools like flows and automation tools like flows, process builder, workflow, or approval process without writing a code. Okay. What are a standard object in Salesforce? Standard objects are already given by the Salesforce. That is known as a standard object. Examples: account, contract. Yes. What are custom object? Custom object that we create that admin or developer created according to their business need is known as a custom object. What is profile in Salesforce? What is profile in Salesforce? Profile is a base level security for object and field, and it is a permission. It is a group of it is group of the permission for object fields and lightning page, layout page, uh, and the custom apps. Yes. What is role? Role is a base level security. Role is a record level security, and it defines the user position in an organization, and it manage the record visibility. It control the record visibility. What is the difference between profile and role? Profile and role. Profile is what user can do, and role is for what user can see, and profile is a base level security for object and field, and role is a record level security. What are permission set? Permission set are a group of the permissions, the group of the permission that for for the user we given extra permission to an user to access like to access on object and field. What is OWD? Organization by defaults. Organization
So organization by default is a base level security for the baseline security for record level security. Baseline for the record level security. It is it can be of public read only, public read write, and a public to transfer. What is role hierarchy? Role hierarchy. Role hierarchy in Salesforce defines the who will report to whom in an organization. What is role hierarchy? Role hierarchy in Salesforce defines who will report to whom in an organization. Okay. What are sharing rule? Sharing rules. Yes. Uh, okay. Sharing rule is basically used for it's also record level security, and if we want to share a record then to particular user, then we can use a sharing rule. Okay. What is data loader? Data loader. Data loader in Salesforce is a tool which is used to export, import, update, and delete the data in Salesforce. What is data The import export wizard? import large volume of data. Okay. Data What is import wizard is used to export the data. Data import wizard is also a Salesforce tool that is used to import the data in Salesforce. what is the difference between data loader and data import wizard? In data import wizard, we can share a limit. We can import the limited data. Uh, but in data import wizard, we can share the large volume of data. What are duplicate rules? Duplicate rules is used to prevent the duplicate records in Salesforce. What is data validation rule? Data validation rule will ensure that the user input should match the that the user's input should match the business requirement. Salesforce. What are assignment rule? I will I will give an example of validation rule. Okay. If a user if we validate a formula in Salesforce that the phone field should always enter. Yes. Okay. Hmm. What are assignment rules? Assignment rule. Yes. No, don't know. What is queue? What is Queue. queue is used to assign the owner of the record. For example, Uh, if we have to
If we have to, don't know example. वाटर escalation rule. Escalation rule. Okay, escalation rules work on the customer service. If the case will not resolve on time, then the users can create an escalation. What is record owner? Record owner. Yes. Record owner. The owner of the record. किसी भी रिकॉर्ड का कोई ऑनर है, जैसे मान लो कि एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड का ऑनर है एक। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को हाँ, क्या क्या कर सकता है वो ऑनर? ओके। अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड को। और क्या कर सकता है? रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है। और और कुछ रीड भी कर इंसर्ट कराना हो तो वो भी। रीड भी कर सकता है। हाँ जी, रीड कर सकता है। ओके। व्हाट इज वर्कफ्लो रूल? वर्कफ्लो रूल। यस। Workflow rule is also an automation tool in Salesforce. ओके, क्या करता है काम है? It is used to mm, send the email. आपने वर्कफ्लो रूल यूज किया है? No, ओके। व्हाट इज प्रोसेस बिल्डर? process builder is also a automation tool that is used to update the record. प्रोसेस बिल्डर आपने यूज किया है, इम्प्लीमेंट किया है? कैसे प्रोसेस बिल्डर बनाते हैं? No, प्रोसेस बिल्डर अभी यूज होता है, करंट में यूज हो रहा है? नहीं, नहीं। तो जो प्रोसेस बिल्डर पहले से बना हुआ है ऑर्ग में, हाँ, तो क्या वो कंटिन्यू अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, वो काम जो प्रोसेस बिल्डर नहीं कर रहा है क्योंकि वो ना फ्लो पे टारगेट करने के लिए बोल देता है। अगर हम प्रोसेस बिल्डर ऐप ऑन करते हैं तो वो मतलब तो जब हम यूज न्यू करते हैं तो। वो तो हम जब न्यू प्रोसेस बिल्डर बनाने जाते हैं तो आता है एक नोटिस, है ना? ओके। लेकिन जो पहले से हाँ, बनी हुई है, वो अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, वो कर रहा है। अच्छा। तो अब प्रोसेस बिल्डर किसी और ऑटोमेशन टूल से रिप्लेस हो गया है? फ्लो से। फ्लो से, ठीक है। व्हाट इज फ्लो? फ्लो क्या होता है? Flow is an automation tool that will use to that will execute it if we want to update the record, create the record, or update, create, or delete the record. प्रोसेस बिल्डर और फ्लो में डिफरेंस क्या है? Process builder and flow. In यस। process builder, we cannot delete the record, but in flow we can delete the record. प्रोसेस बिल्डर बिफोर सेव और आफ्टर सेव दोनों पे चलता है, रन करता है? Before save or after save? यस। हाँ, और फ्लो भी? फ्लो तो करता ही है बिफोर सेव आफ्टर सेव। प्रोसेस और बिल्डर नहीं प्रोसेस करता। किस पे नहीं करता है, बिफोर पे या आफ्टर पे?
After sale. व्हाट इज वर्क फ्लो? Workflow. यस, वर्क फ्लो क्या होता है? Um, Workflow is an automation tool. हम्म। Mhm. Workflow is an automation tool that we use to that that perform that perform action when certain conditions are व्हाट इज रिपोर्ट इन सेल्फोर्स? report. A यस। report is a list of records from object that we a report is a list of record of from object हम्म। that can be readable, or we can apply filter also, and grouping by we can grouping it for रिपोर्ट बनाया है आप सेल्फोर्स में? आप हाँ बना के दिखा सकते हैं? हाँ 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक लीड रिकॉर्ड एक जितने भी जनवरी क्रिएट हुए, 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 2026 जितने भी लीड रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं वो सारे हमें शो करवाना है। ठीक है, कि कितने लीड आए हैं 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, दिखाइए करके। ठीक है। रिपोर्ट टाइप क्या होता है? रिपोर्ट टाइप डिफाइन मतलब which object and fields are shown on a report. ओके, इसमें दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं? हाँ तो अभी आपको लीड पे रिपोर्ट बनाने के लिए कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाना जरूरी है या बिना बनाए भी कर सकते हैं? वहां पे बना हुआ है स्टैंडर्ड, आप चेक करके हाँ देखें। बना हाँ हाँ आपने डेट क्या बताया था? 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2026।
कोई लीड बनी नहीं है साइड। आपने सेव एंड रन कीजिएगा इसे। हम्म। एक भी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज डैशबोर्ड? डैशबोर्ड क्या होता है? इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। एक डैशबोर्ड बनाकर दिखाइएगा। डैशबोर्ड। हम्म। ठीक। इसी के ऊपर। हाँ, इसी रिपोर्ट को आप डेट चेंज कर दीजिए, जो क्रिएटेड डेट है ना वो 2025 को ले लीजिए। 25 से स्टार्ट कीजिए, तो उसमें उसी कुछ लीड डेटा आ वाली जाएगा। रिपोर्ट को 2025 से करना है। हाँ, और फिर इसी रिपोर्ट को आप डैशबोर्ड में शो करवाइए। ठीक है। सेव एंड रन कीजिए। वो जैन में नहीं है, मैंने पूरा दिसंबर तक निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेव एंड रन कीजिए। आ गया ना, रिकॉर्ड आ गया, बस इतना ही। हाँ हाँ। इतना की जरूरत था। अब इस रिपोर्ट को आप डैशबोर्ड में शो करके दिखाइए। ठीक है। हो गया। टैबुलर रिपोर्ट क्या होता है? टैबुलर रिपोर्ट Tabular report is a simple report having a rows and column. एंड समरी रिपोर्ट। सॉरी। समरी रिपोर्ट क्या होता है? हेलो। हेलो।
Summary reports which we grouped. Hello, hello, hello. Yes, Summary yes. reports Continue. which we group by rows. If we group by rows and columns. And what is matrix report? If we group by multiple rows with column. And what is joint report? Join report having the two reports in a same two reports in a same report. What are bucket field in Salesforce? What are bucket fields in reports? But bucket fields is used in Salesforce is used to group the record by categorize by categorize in मतलब grouping the record by categorize it in What is page layout? sorry, categorize without creating a new field. Okay. What is page layout? What is page layout? Yes. Page layout, okay. Page layout is how the record detail page look to the user is a page layout. We can manage we can manage by its fields and record list. What is compact layout? Compact layout is used to highlight the fields on the top of the record page. What is app exchange? App Exchange. Yes. App Exchange is a marketplace where we can install our application that we want to use in Salesforce. What are global actions? Global action. Yes. Global What is action. what is the schema builder? So it's called it's a visual representation of sorry. It show the relationship between the object. Yeah, it's a visual representation of a relationship between the object and we can also create the object from the schema builder. What is sandbox? It's a copy of the production org.